Good morning, beta. Just one topic is remaining in a lesson number 2, that is concentration of solution. Just only one numerical is present in this lesson. How to find the concentration of solution? Solution means a combination of solute as well as solvent. In any solution, solvent and solute, two things are present. Solute means a amount which is present in lesser, means suppose salt and water, in which salt present in less amount compared to the water. In any solution there are two substances are present, one is solute and another is solvent. Solute which is dissolved in solvent, and solvent in which solute are dissolved. Okay, concentration of solution means just amount of solute present in given quantity of solution. सो आपका कंसंट्रेशन क्या है, आपके पास जो सॉल्यूशन दिया है उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. आई एम रिपीटिंग अगेन, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज अ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन. अब इसको हम फॉर्मूला के फॉर्म में देखेंगे बेटा. Suppose you have to calculate the concentration of solution, then formula will be concentration of solution is equal to mass of solute divided by mass of solution into 100. So concentration of solution is mass of solute divided by mass of solution into 100. तो ये फॉर्मूला यूज करके हम concentration of solution फाइंड कर सकते हैं. Let's take one example. Example is a solution contains 30 solution जो दिया है बेटा वो आपका है salt plus water, that is the solution, in which 30 gram of solute is present. means salt present जो है आपका 30 ग्राम present है. तो salt 30 ग्राम and which is dissolved in 370 gram of water. वाटर विच इज लिक्विड जनरली लीटर में होना चाहिए, बट हमको ये ग्राम के फॉर्म में लेना है क्योंकि दोनों यूनिट सेम होना चाहिए. सो वाटर का जो अमाउंट है वो आपका है 270 ग्राम. ओके बेटा. सो मास ऑफ सॉल्ट इज 30 ग्राम, मास ऑफ वाटर इज 270 ग्राम. दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा. अब हमें कंसंट्रेशन निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में यूज करेंगे कंसंट्रेशन के लिए, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट इज 30 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मींस एडिशन ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, दोनों ऐड करेंगे तब हमारा सॉल्यूशन बनेगा. बस आपको इतना ही ध्यान देना है बेटा. सो 30 प्लस 270 multiply by 100, you will get 30 by 300 into 100. 30 10 जा 10 आया आपका और 10 10 जा here 10 means percent 10%. So concentration of solution is 10%. It means that amount of salt is present in a solution is 10 ग्राम और 10%, मतलब 100% में से 10% आपका सॉल्यूट है, दैट इज सॉल्ट हियर. बट
जब आपका सॉलिड में प्रेजेंट है तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बट अगर लिक्विड डिसॉल्व है लिक्विड में, दैट टाइम हमारा फॉर्मूला क्या होगा बेटा? जब अमाउंट हमारा लिक्विड में प्रेजेंट होगा तो उसके लिए आपका कंसंट्रेशन का फॉर्मूला रहेगा in place of mass we will take volume. So volume of solute divide by volume of solution multiply by 100. Okay, so take another example. A solution contains 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water. So alcohol and water both are mixed in which? Alcohol which is dissolved in water, that is present 30 ml. Okay, and quantity of water is 150 ml. Okay, so in 150 ml 30 ml alcohol is dissolved. So here alcohol is solute because इसका क्वांटिटी आपका लेस है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, और अल्कोहल इज डिजॉल्व इन वाटर. ओके बेटा, सो यू हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन. सो फॉर फाइंडिंग द कंसंट्रेशन व्हाट यू विल डू? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, दैट इज solute and this is solvent, and दोनों का सम करेंगे तो solution. So volume of solute means 30 ml divide by volume of solution means you have to add both one, 30 plus 150 product of 100, 30 divide by 180 into 100. So just try to find out the answer. So 30 divided by, so here 0 to 0 cancel, 3 6 18. So 6 से आप 100 को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 16.6%. Okay, so in this way we can find out the concentration. There is one or two examples are given in your textbook as well as in workbook. So just solve in this manner. Just take in as a numerator solute को आप numerator में लो और denominator में solute plus solvent and then multiply by 100. You will get your concentration. One more thing, we have finished lesson number 1, lesson number 8, and now we have finished lesson number 2. So just complete your workbooks of all 3 lessons. So there will be a test of lesson number 1 in this week. Okay, so be ready for that. Thank you beta.